more advanced than us. नहीं ना us वाली बात नहीं, हर classmate मतलब उसके क्लास के हिसाब से she had a lot worked a lot and she deserves of course and long way to go she has and everyone has to long to way to go, right? Don't take it that as a destination. Yes, Vanita, good afternoon. I hope you all are good. See, I have checked your paper and आपका पेपर का जो मार्क्स है वो रजिस्टर होना है. आई हैव ऑलरेडी मतलब मैंने अभी सबमिट कर दिया है. वो अपने आप लिखते हैं. नहीं नहीं घर पे नहीं भेजेंगे एंड रिकॉर्ड रखते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपेंस गार्जियन किसी का पूछ देते हैं, अच्छा आप बताओ मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कितना टेस्ट दिया है, राइट? देन उनको कहना पड़ता है. दे आर अकाउंटेबल, राइट? दे आर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स. आपका टेस्ट पेपर मुझे नहीं मिला है. आशा का, आकाश का मुझे आज मिला है और सबका मिला है. तुम दे दो ना, हार्ड कॉपी दे दो ना. अरे मैंने फ्राइडे को भी बोला था आपको कि ऑन दे दीजिए मुझे. हार्ड कॉपी मुझे दे दो. इट वुड बी बेटर टू राइट सम कमेंट. क्या आपका खो गया? दोबारा दे दो, दोबारा लिख दो. 1-1.5 घंटा का भी टाइम निकालो, लिख दो. It is an opportunity. You know, every crisis leads to an opportunity. Always remember, every crisis leads to an opportunity. And think, होता क्या हम क्राइसिस में ये लूज किया है ना, it is a time, it should not have been done, right? Once it has done, जो हो चुका है उसको आप रे बैक नहीं कर सकते, but utilize those crisis time, right? It's a COVID-19, it was a crisis time. Look at many people have become billionaires, right? By using this crisis. And most example is Swiggy, Zomato, ये ठीक है. और ये क्या है Lasius, you know Lasius, fresh to home देखो कितना ऊपर चला गया. Amazon का बहुत सारा, Blinkit, right? Zomato, Swiggy बहुत सारे हैं, right? So लिख करके दे दो, right? Can I expect that? हाँ, लिख करके दे दो, otherwise everything is fine. चलो, let me discuss what we left in the last class. हमने last class में क्या discuss किया था? सीधा क्लास मॉर्निंग से इवनिंग चला करवा दिया तुम लोगों ने. हमने नहीं करवाया. उन्होंने बोला कि सर इट इज टू अर्ली. मुझे लगा कि तुम लोगों ने कहा होगा सुबह पढ़ाने का फ्रीक्वेंसी कुछ और होता है. सुबह उठना पड़ता है. मैंने क्लास टाइम देखा ना, तुम्हें लगा कि उसने बोला कि सर अर्ली. किसने कहा था? सर ने कहा था. वो कहते हैं कि सर हमें ऐसा कहते हैं कि उनका टाइम टेबल को कैटर करने के लिए हम ये टाइम टेबल. सर एक बार पता क्या किया उन्होंने? इकोनॉमिक्स की क्लास को 1 घंटा आगे कर दिया और हिस्ट्री क्लास में मतलब सॉरी इकोनॉमिक्स की क्लास में घंटा पहले कर दिया. किसी का टैली कर रहा होगा. सर पता नहीं कैसे क्या होता है ना. नहीं क्या होता है समटाइम्स वो टैली करता है और बच्चा क्या होता है 2 सप्ताह बाद वो देखता है अच्छा मेरा टाइम टैली कर रहा है, वो क्लास भी नहीं लेता. लेट मी टेल यू, ये इतने ही लोग नहीं क्लास में और ज्यादा है. इसके 40% 50% मैक्स क्लास लेते हैं, 50% बाद में ले लूंगा, देख लेंगे, राइट? हाँ रिकॉर्डेड कर लेंगे, ये होता है, राइट? तो उन्होंने कर दिया होगा, राइट, कि मेरा टाइम ओवरलैप कर रहा है और उसने टाइम टेबल को चेंज कर दिया. अच्छा एनीवे, मैं बता रहा हूँ इलेक्शन डेट हैज बीन ऑलरेडी शेड्यूल्ड, राइट? देयर आर 7 phases. Now what do you learn? Let me tell you, what will you learn from this election, right? For UPSC. बाद में छोड़ दो, MLA MP बनना है बाद की बात है, right? Now something you can learn, like what is model code of conduct. Model of code of conduct implements on the date of election is announced, right? What is model code of conduct, right? Who monitors model of conduct, code of conduct, right? बेसिकली पहले है क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मैंने कल श्रवण्या को, कल या परसों भेजा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. आपने किसको सर्कुलेट किया?
मुझे नहीं पता, एक ग्रुप बनाओ, सुनो, wait, see, make your informal group, मैंने I have told you to make an informal group. कभी कभी क्या होता है, sometimes I find some important point that I want to share with you. अब होता है कि in absence of right channel, जो कि ताकि मैं आपको पहुंच सकूं, तो होता है क्या कि मैं भूल जाता हूं या वो पास कर जाता है, right? So make a informal group, very informal, right? It's not from management side, from your own initiative, right? And whenever I find something relevant for you, I'll send even anyone to you. Just you drop in that group. What will happen? You can access those information. ठीक है नहीं? But yes, उसमें किसी का नंबर लेके किसी को don't misuse. Yeah, let me tell you, ये भी होता है. ये all are student, आप जिस टाइम से पास कर रहे हैं, I have already done that time, right? The people who were used to do that. Let me tell you, one of my friend was in Bangalore. उसको क्या करता था कि, right, he used to take someone girls numbers and used to distribute among the groups. Boys की phone करो उसको, and that is not ethical. That is not good. You, right? Let me tell you, अगर girls अगर कोई legal action ले लेगी तो आपको problem में आ जाओगे. Right? Even you should not do it ethically. अगर किसी ने दिया भी है तो आपको उसको बोलना चाहिए कि what are you doing? Right? Our job is not to harass someone, right? To call irresponsibly someone. Yeah, you can talk to each other. You can, meet each other. You can interact. But yes, at the same time, certain dignity and certain decorum should be there. नहीं होना चाहिए. Otherwise, you all are free. You all are good citizens, right, of this country, right? Anyway, so make that group as soon as possible. बनाइए इसको, ठीक है? इसको मैंने भेजा है. This she will circulate among you. मेरे पास मैंने फटाक से किया तो उसको तुमने किसको भेजा? अच्छा, राहुल को. राहुल ने किसी और को भेजा. यही चेन होता है. That's good. 2-3 लोगों को भेजा, right? You just chain, जो आया तुरंत फॉरवर्ड कर दो. और ये आया था इंडियन एक्सप्रेस में. What is model code of conduct, right? So I was talking about what you can learn from this election. You can learn what election is all about. Second, you can talk about the party system in India, right? Third, what is model code of conduct, what is the election commission, how election commission is being appointed, right? What is the process of election, right? The entire process is election, right? For example, from the date of election that is announced on a few days ago, all right, till the election of 7th of June, the date on which the result will be out. ठीक है? तो एक पूरा प्रोसेस है पूरा इलेक्शन का. There will be nomination. Now, how nomination is done, right? For example, any constituency, how consider you are going to contest an election, right? How nomination is done. Consider you are an independent candidate. You are not from party. Now, how many witnesses you want? How many supporters or how many opposers you want? Or consider you get a ticket from a party like BJP. Now, how many proposer and how many secondary you may want? Right? So, एक 10-15 क्वेश्चन बनाइए कि क्या-क्या हम सीख सकते हैं for your examination purpose. Right? And this phase is called high time politics. आपने नहीं सुना होगा? The election phase is called high time politics, basically because if you look at, every organization are super active, right? Look at the bureaucracy, it becomes too active during हर काम में वो देर कर देंगे. Look at Indian bureaucracy, where they are very slow, but at the time of election they are become very active, right? कहीं पर जाएगा तो कुछ दारू पकड़ेगा, कहीं पर कुछ पकड़ेगा, कहीं पर पैसा पकड़ेगा. It happens, right? So you can learn for 10-15 क्वेश्चन लिख लीजिए. लिखवा दूं क्या? Yeah. You can learn few questions. Yeah, right. लिखिए तो 2-4 क्वेश्चन. लिखिए. What is election? And how election is conducted in India.
ये न्यूज़पेपर में बहुत सारा अभी आता रहेगा, राइट? What is the election and how election is conducted in India, right? What is the election commission? What is the election commission? Its composition, power and functions. And functions. What is significance of election commission in India's democracy? Right? बहुत सारे आते रहेंगे. Third, what is model code of conduct? What is model code of conduct? Right? And what are its salient features? What are model code of conduct? What are its salient features? What is party system in India? Party system in India. तो अभी बात करूंगा. What is party system in India? How India transformed from coalition government to how India transformed from coalition government to BJP system since 2014, right? What is coalition government? Right? Tisra, what are the factors of electoral behavior? What are factors? What is coalition? COAL. Yes. What are factors that determines electoral behavior? Behavior in India. Electoral behavior means on what ground people cast vote. A caste or religion or language or leadership or economic policies. There are many factors, that determines electoral behavior in India, right? ये आएगा बहुत सारे, right? Now, right, next is, what are the role of women? हो गया 7 8 7 ना 6 हुआ 7th you right? What is role of women in India's electoral democracy? Right? Electoral democracy यानी electoral process पे focus करना है. कुछ और याद आ रहा है? Role of role of bureaucracy. वही role of election commission हो गया role of bureaucracy. Sorry?
क्रिएट नहीं की जाती, डेपुटेशन पे ली जाती है, डेपुटेशन पे, ट्रांसफर नहीं होता, डेपुटेशन पे ली जाती है। आप इस डिपार्टमेंट में हो, उस टाइम तक उस डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन के आप मेंबर हो गए। ओके, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी लिख लो। इन इंडियाज इलेक्शन, ब्यूरोक्रेसी तो इलेक्शन कमीशन में। रोल ऑफ स्टेट मैशनरीज, स्टेट मशीनरी सब हो गया, मतलब इलेक्शन कमीशन, पुलिस, राइट, टीचर्स दैट आर एम्प्लॉयड इन, राइट। सो स्टेट यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो रोल ऑफ स्टेट मशीनरीज इन इंडियाज इलेक्शन, ठीक है। ईवीएम डिबेट नॉट, राइट। नॉम 9 वन नेशन वन इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट 2029 से शायद ये लागू हो। One nation and one election. These are the issues that you can focus on. होंगे बहुत सारे अमेंडमेंट होंगे, राइट। वन नेशन एंड वन इलेक्शन, जो भी होगा हमें ध्यान रखना है। These are the major issues that you should focus on. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म, हाँ, यस यस, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये जो कुछ और पॉइंट, ये जो 8-10 चीजें है ना, अभी 2-3 महीने इलेक्शन होंगे, बहुत न्यूज़पेपर यू जस्ट सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज, right? Don't read a conversation between two leaders, right? Whenever there you find any debate on this the idea, right? Like for example, role of election commission in ensuring India's democracy, or for example, women, right? How women increased in India's parliamentary democracy, right? What are the women's issue raised by political party? Like, you know, if you look at Congress party have raised, you know, that they will provide 50% reservation to women, right, in all government jobs if they voted to power, right? Now if you look at earlier, Priyanka Gandhi has actually talked about that the Congress party will give 40% seats ticket to the women candidate, right? Every political party wants to attract women, right? ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हम जस्ट बैक टू द सिलेबस, जो रेगुलर सिलेबस, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस, बट बैक टू द रेगुलर सिलेबस। हम क्या कर रहे थे, आर्टिकल 22 में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट भी डिस्कस्ड। अच्छा, हैव यू टॉक्ड अबाउट पीएमएलए एक्ट 2002, राइट। देखो पीएमएलए एक्ट 2022, ना आपको बताया कि 2 लॉ ऐसा था, राइट, जिसको अगर क्रिटिक दे कॉल ब्लैक लॉ। वन इज पीएमएलए एक्ट एंड अनदर इज द ऑर्डिनेंस 1975, which actually deprived individual to, you know, utilize habeas corpus, right, in order to protect their right to life. Ordinance 1975, which is justified by the Supreme Court in ADM, yes, Jabalpur versus शिवकांत शुक्ला, और इसको हेबिस कॉर्पस केस भी कहते हैं, पता है? हाँ हाँ, इसको हेबिस कॉर्पस केस भी कहते हैं, राइट। और यहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कमिटेड जुडिशरी, राइट। नाउ सुप्रीम कोर्ट रिफ्लेक्टेड एज अ कमिटेड जुडिशरी, राइट। सुप्रीम कोर्ट reflected as committed judiciary. I told you that if you see the Y.D. Chandrachud, right, the current Chief Justice, his father was a judge and he regretted himself, right, what I have done in this law. Similarly, if you look at the PMLA Act, PMLA Amendment Act, basically, you know, Prevention of Money Laundering Act was formed in
framed in 2002. If you look at PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002. कब बना था ये? 2002 में, right? Of course, Parliament framed Prevention of Money Laundering Act 2002. बेसिकली पर्पस क्या था इसका, लॉ का पर्पस एक्चुअली क्या बना था? दिस लॉ वाज फ्रेम्ड इन बैकग्राउंड ऑफ द पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, राइट? Now, Prevention of Terrorist Act was actually to prevent terrorist activities, and PML was to prevent the financial part of that money terrorist activity. Am I making sense? This law was passed in context of Quota 2002, which was repealed in 2004 or 2005, right? Okay, repealed in 2005. The law was framed to curb the financial sphere of terrorist activities. In India. Got the idea? In 2002, there was a POTA Act. POTA Act means Prevention of Terrorist Activity Act. Right? It was an extraordinary law. अभी बात करेंगे prevention detention में. At the same time, PMLA Act was formed. Now, what happened in 2022? Government amended the PMLA Act, right? That is called PMLA Amendment Act 2022, and allowed this act to apply in the normal civil, so-called financial transaction mismanagement or irregularities, right? In 2022, the government ये लिख लिया ऑर्डिनेंस वाला. In 2022, the government amended PMLA 2002 in order to implement law in regular financial irregularity. यहाँ पर रेगुलर कॉमन लिख लो, और इन सिविल financial irregularity, right? This law gives enormous power किसको देता है? सबको पता है. Yeah, ED. This law gives enormous power to ED, right? To arrest someone right, without an FIR. FIR लॉन्च करने की जरूरत भी नहीं है, ईडी खुद ही रजिस्टर कर लेगी. दैट इज कॉल्ड ईडी IR. वो अपने आप कर लेगी on the basis of suspicion, right? Amended in order to implement law in the civil financial regularity. This law gives enormous power to ED
to arrest someone without an FIR, right? And this, yeah, within this law, in this law, citizen or a person or an accused person in this law, an accused person is deprived of Article 22 Clause 2. क्या है Article 22 Clause 2? A person should be presented before the court within 24 hours, excluding the travel time. So in this law, accused person is deprived of Article 22 Clause 2. Yani person cannot be presented before the judicial magistrate within 24 hours. Right? This is something extraordinary law, right? Now, the course, this law was challenged. This law was challenged in the Supreme Court. This law was challenged in the Supreme Court. The Supreme Court in Bijay Mandal Chaudhary, the Supreme Court, Vanita, are you writing? The Supreme Court in Bijay Mandal Lal Chaudhary, हाँ? विजय मंडल लाल चौधरी ऐसा करके है, जैसे भी है लिख लो ना, विजय मदन लाल चौधरी, ओके, तो पक्का ना नेम ऐसे ही विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेट क्या है 2023 से 2022, राइट. सुप्रीम कोर्ट इन विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2022 validated the law. Validated the law. Validated the law. उन्होंने क्या किया कि बोला कि सही लॉ ठीक है. Why? Because actually state has argued that yes, this law is mandatory. Now you must be knowing that how many people have been prosecuted under PMLA, right? If you look at 100% have been arrested under PMLA, right? 95 are from opposition party, and if you look at the conviction rate is 0.2%. Now we can say that how much this law is actually misused rather than used, right? So there are many scholars who says that this government, the present government, is not ruling by the law. It is not ruling. It is not governing by the rule of law. It is governing rule by the law. कि भाई कानून है PMLA का, आ जाओ. Look at Arvind Kejriwal have been denied. Arvind Kejriwal have been issued several notification, right, by the ED. आ जाओ, वो भी ढीठ टाइप का, नहीं आऊंगा, right? Many persons have been arrested, they are living in jail. Satyendra Jain, बहुत लोग हैं, and their judiciary is not taking at all. Let me tell you, there had been already the review in the court, right? This judgment of the Supreme Court has been challenged in the Supreme Court itself. That is called, judicial, that is called review petition, right? But Supreme Court has agreed that yes, certain part of this law is extraordinary and we have to review on it. Let's see when it will review. Of course, after अब तो अब नहीं होगा, election के तक तो नहीं होगा. Election के बाद क्या होता है? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे हाँ सब ठीक है, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ना कहे. Depends on the election result. Let me tell you, हो सकता है 400 पार अब की बार हो जाए. Supreme Court will have no courage to say कि this law is invalid, unconstitutional.
या हम जैसे टर्की में है वैसे हो जाएंगे, जैसे टर्की में हो रहा है, जैसे ईरान में हो रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। देखिए, देयर इज ए रिव्यू पिटिशन against the above judgment. There is a review petition against the above judgment in the Supreme Court. अच्छा, रिव्यू पिटिशन किससे मिलता है पता है आपको? ये हमारा एक आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा, 137 पढ़ाएंगे ही आप लोगों को। रिव्यू पिटिशन क्या है, कंप्लीट जस्टिस क्या है, राइट? Any judgment given by the tribunal or the High Court or the Supreme Court can be filed in the Supreme Court itself. Am I making sense? Now you know that the Supreme Court is a apex body. Then you have High Court, and then you have District Court, you have Subdivisional Court, right? And then you have Gram Nyayalay. ये हमारा ग्राम न्यायालय, ये हमारा कोर्ट जुडिशरी का स्ट्रक्चर है। यू ऑल नो दैट, या नहीं जानते हो? बेसिक्स में नहीं करा है, पढ़ा है ना, ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, राइट? अब क्या है कि इसके पैरेलल में भी बहुत सारे जुडिशियल सिस्टम है, अगर आपको पता है, जिसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। आपको नहीं बताया मैंने, ट्रिब्यूनल भी होता है, अलग अलग तरीके का ट्रिब्यूनल होता है, राइट? एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हाँ, कितना? यस, यू आर राइट, 323A। और एक होता है अदर ट्रिब्यूनल्स, इसमें कुछ भी होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल हो सकता है, राइट? अंडर आर्टिकल 323B, राइट? अब क्या होता है कि ये ट्रिब्यूनल के बाद और भी ट्रिब्यूनल होता है, और भी बता देता हूं, राइट? जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल, एक है हमारा आर्टिकल 262, that is called interstate water dispute tribunal. Interstate water dispute ट्रिब्यूनल, ये भी होता है। इसका काम क्या है? इंटरस्टेट वाटर में जो झगड़ा मगड़ होना पानी को लेकर के, तो उसको सॉल्व करना है, राइट? लुक एट दिस बॉडी work independently, this body also work independently, this body works, but these all are judicial body, right? However, they are not called judicial body, they are called tribunal. Their work is judicial in nature, but their work is not legal in nature. Their work is administrative in nature, that's why they are called administrative tribunal, right? Sometimes their work is political in nature, like distribution of water, and that's why it is called interstate water dispute tribunal. Let me tell you one thing, I was talking about article 137, that's why, right? अब कहीं का भी जजमेंट हो ना, कहीं का भी जजमेंट, यार आर्टिकल 136 है, 137 है, 7 ही है ना? मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, पक्का ना, राइट? मेरे पास बेड एक्ट नहीं, बेड एक्ट दे दो जरा, थैंक यू। 137 जो लॉ है, आर्टिकल है, वो कौन सा है? 137 ना, पक्का ना? लेट मी चेक, पता चला बाद में तुम मेरे ऊपर जुडिशरी बैठाओगे, जूरी बिठाओगे, सर ने गलत बता दिया। लेट मी, see, I was talking about yeah, review petition ही होता है। एक मिनट आप बात कर रहा था, स्पेशल लीव पिटीशन भी होता है, इसलिए मेरे दिमाग में 136 पहले ये समझ लो। रिव्यू पिटीशन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना, कुछ भी,
उसी में सुप्रीम कोर्ट को फिर से वही सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, दैट इज कॉल्ड रिव्यू पिटिशन। आपने जो जजमेंट किया उसको रिव्यू करो। व्हाट इज रिव्यू रिव्यू पिटिशन? The order of the power of the judiciary to review its own on judgment, that is called review petition. Another is called a special leave petition. A special, इसीलिए मेरे दिमाग में कुछ और आर्टिकल आ रहा था। ये है आर्टिकल हमारा 136। जुडिशरी होगी बात तो आई विल टॉक, डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट, राइट। नाउ कुछ भी जजमेंट होगा ना, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू hear any judgment given by any tribunal or any high court. That is called a special leave petition. What is a special leave petition, Vanita? What is a special leave petition? A special leave petition is a power of the Supreme Court to hear the judgment given by any tribunal or the high court. That is called a special leave petition. What is a special leave petition? The power of the Supreme Court to hear the judgment or reopen the judgment given by any high court or tribunal. That is called a special leave petition under Article 136. Getting the idea? What is a special leave petition? Power of the Supreme Court to hear the judgment given by any high court or tribunal of this country. Now, what is review petition? The power of the Supreme Court to hear its own judgment. That is called review petition. The power of the Supreme Court to hear or rehear its own judgment. That is called review petition. Now, review petition has been filed against this case. Right? These two cases shows actually, हाँ बोलिए, नहीं मिलिट्री वाला नहीं, राइट। मिलिट्री का मिलिट्री का अपना अलग है, तो सीधा से उधर जाता है, किधर इसके प्रेसिडेंट के पास जाता है, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर मिलिट्री वाला कुछ है ना तो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है, इधर नहीं आता है। समझ में आया? अच्छा, मैं विजय मंडल लाल चौधरी की क्यों बात कर रहा था? Why I was talking about PMLA Act 2022. Basically, when you are arrested on a very fictitious things, fictitious मतलब any cooked up stories, cooked up story कुछ बना लिया कि हाँ ये हैं, उनके अकाउंट में ना ऐसे वैसे हुआ है, right? Even no FIR, no investigation, directly arrest. No producing that person before the judiciary, magistrate, within 24 hours. Now the person's liberty is under the threat, isn't it? Consider someone is arrested, like अभी जो इसका कौन था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, मनीष सिसोदिया. Why is his Article 21? Has he any article right under Article 21? Personal liberty है कहाँ सा? Now law ने बंद कर दिया ना, लाइफ तो है बट लॉ ने बंद कर दिया ना. सी मैंने क्या कहा, if you look at A.K. Gopalan case, there was a narrow definition of liberty. Narrow definition of liberty, right? If you look at it suits A.K. Gopalan judgment. Judiciary can protect someone's liberty from arbitrary action of the state, not from the arbitrary law. Look at it suits A.K. Gopalan judgment that the Supreme Court can protect someone from the arbitrary action of the state, not from the arbitrary law. But look at the Menka Gandhi judgment, what Supreme Court asserted, law itself should be just, fair and reasonable. Now look at, so we are not following the Menka Gandhi case in this case, we are following the A.K. Gopalan judgment. Right? And then we are narrowing down the concept of liberty in India. समझ में आया? ईशान समझ में आया ना? कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं? Asha, are you getting the connection? Right? So look at when the law becomes arbitrary and judiciary is not doing anything, then we are actually going back to the A.K. Gopalan judgment, right? But sometimes, judiciary struck down the law itself, right? And said it's a
against the independence of the judiciary or sometimes liberty of individual. For example, look at the judiciary has struck down the IPC 377. 377 now. Homosexuality. That was a law. It has struck down the law now and said homosexuality is not a crime. Right? कल कहाँ प्लेस पे था? Right? रात को 10 बजे. Or I saw this was my first time on CP, night में. तो मैं घूम रहा था. I saw many, homosexual couple, right? And just we are discussing why CP is a place, because where you'll go, you will give freedom, the people will come. A crowd place may be the space which may give more space to the homosexual couple. Otherwise, society is very cruel. देखेगा वो चुटकी लेना शुरू किया, उस पर पत्थर मारना शुरू किया, और मेजोरिटी उसी के साथ जाती है, राइट? डर के रहते हैं लोग, इवन आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, होता है ना? एनीवे, चलो मैं कल गया था पहली बार. वन ऑफ माय सिस्टर इन लॉ इज इन बड़ौदा हाउस, IS. तो उसको अभी शी इज जस्ट ट्रांसफर टू दिल्ली, उसको घर मिला इधर कनाट प्लेस में. बोले चलो घुमाते, और फिर उसी में चलो CP घुमाते. एंड देन आई हैड एक्सपीरियंस अबाउट होमोसेक्सुअल, राइट? तो जहां पर लिबर्टी दोगे, पीपल विल, जब मैं आपको लिबर्टी दूंगा तो आप कुछ बातें मुझे बोलोगे, इजंट इट? अगर मैं आपको लिबर्टी क्रश करूं तो आप एक पतली गली से निकल लोगे, क्या बोलना है इसके सामने, बेकार है बोलना, isn't it? Right? Anyway, so liberty is something that should be protected, right? Now, what is another topic, another thing that yes, we have done. Now, let me move to Article 22. It's a very easy article. And it gives, some against protest. Protection against arrest or detention. अच्छा, आपको वो डीके बासु का मिला एक पेज का? आपने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? You didn't get it? अच्छा, you receive, आप ले लीजिए, ठीक है? You just ask for the piece. सर, इनके प्रिंटर से प्रिंट बहुत खराब आता है, बहुत खराब. मेरे जैसे आंख से तो पढ़ा ही ना जाए. चश्मा लगवा देंगे तुम्हारा. लगा हुआ है, पावर बढ़वा देंगे. Anyway, yes, I know that print is not good. है तुम्हारे पास वो? Then एक मिनट. Yeah, I saw. ये फिर भी ठीक है, ये भी अच्छा. ये फॉन्ट मैंने इसलिए छोटे करवाए कि ये थोड़ा सा ना बड़ा हो रहा था, एक ही पेज में ला दिया. किसके लिए? प्रिंट के लिए. मैं बता रहा हूँ, हम लोग बहुत पैसा खर्च करते थे प्रिंटिंग पे, राइट? मेरे तो अभी भी इतना किताब प्रिंटेड बुक्स है मेरे पास, इतना सारा, बट अब मैं पढ़ता नहीं हूँ. अब तो मैं खरीद लेता हूँ किताब, सिंस आई अर्न. तो मैं इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी ऑन बुक्स. अर्लियर वी हैड लिमिटेड मनी, तो हमें क्या करते थे? प्रिंट आउट. एंड प्रिंट आउट दैट टाइम देयर वाज a 50 पैसा. Now it is a 1 rupees, right? 2 or 3 rupees. 1 रुपये में मिल जाता है कई जगह पे. एग्जैक्टली. कहाँ पर? ओके, सत्य निकेतन. वो मेरा एरिया हुआ करता था. कौन सा? थैंक यू. उसके पीछे साउथ कैंपस था, है पता है? मैं 2 साल रहा हूँ उसके अंदर. मेरा आयाराम सोया दास कॉलेज नहीं था, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज को बोलते थे आयाराम सोया दास. आई वाज इन PGDAV, लोकेटेड इन लाजपत नगर. यस. एनीवे, हम लोग बहुत खर्च करते थे प्रिंट आउट पे. सॉरी, हाँ वो तो है. अब तो किताबें सस्ती हो गई है,
बट बहुत किताबें बहुत महंगी है। और लक्ष्मीकांत तो कुछ नहीं है। देयर इज वन बुक ऑन 61,000 रुपीज, 48,000 रुपीज। तो बहुत सारी किताब है। अब अच्छी देखो, ये किताब नहीं है जो लक्ष्मीकांत मिलता है ना, दिस इज नॉट अ बुक। जो मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ बुक, इट्स समथिंग कॉल कुंजी। Book is, there is a book written by Grand Lostin. There are many books, right? जो किताब एक बार लिख दिया, they will never abandon. लक्ष्मीकांत हर वक्त हर साल 3 chapters are added, new chapters are added. हाँ? PYQ is added with update explanation, right? तो कैसे बचेंगे, right? But look at like for example, if you buy the book like India's Freedom Struggle by the बिपिन चंद्रा, एक बार पब्लिश हो गया, एक बार पब्लिश हो गया, 5 साल पहले लोगों ने वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, आज भी आप भी वही पढ़ेंगे. There is no difference, right? Or look at question, some there is one book India in Plastic to Partition by शेखर बंदोपाध्याय, 2007 में लिखा, आज भी वही है, वो बदलेगा नहीं, कुछ बदलना नहीं है. मॉडर्न इंडिया रिटन बाय सुमित सरकार वेरी लॉन्ग एगो, कुछ बदलने नहीं जा रहा है. Anyway, चलो बात करते हैं. अब इसमें बताता हूं, आर्टिकल 22 में 7 क्लॉज है. देयर आर 7 क्लॉजेस, डरना नहीं है, राइट? इफ यू लुक एट आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2, gives 3 rights, gives 3 rights, right? पहला, right to information on the ground on which the person is arrested. Right to information, right to information on the ground on which a person is arrested. ठीक है. अब राइट टू इंफॉर्मेशन देखते ही आर्टिकल 19(1)(a) नहीं लगा देना है. अगर बात हो रही है अरेस्ट की बात, अरेस्ट और डिटेंशन की बात, राइट? सो राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑन a person is arrested. Secondly, a right to consult a legal, lawyer, right? Right to consult a legal practitioner. Right? And third rights. Now, this all rights are to arrested person. Let me tell you, this right is a right to a arrested person. ये जो right है ना हमारा, वो ये है arrested person. Right to arrested person है. पुलिस में एक बार चले गए तो what are the rights you have? Third right is right to be produced before judicial magistrate. Right to be produced before a judicial magistrate or in front of judicial magistrate. Judicial magistrate. Right to be produced in front of judicial magistrate before 24 hours except the travel time. Right, travel time from the place of arrest, from the place of arrest to the court. अब सवाल ये उठता है कि क्या एक someone can be arrested in Odisha, can be produced in Gujarat? Is it possible? Huh? Exactly. The answer is no. Look at the here written, it is a nearest magistrate.
राइट। सो ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर अरेस्ट किया, अब चलो तुम गुजरात चलो, वहां पर जाकर करेंगे। वहीं पर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास दैट पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट, एंड देन जुडिशरी विल से ओके यू गो टेक द पर्सन इन रिमांड बिकॉज केसेस इज समवेयर फाइल्ड। होता है ना, राइट। समटाइम्स केस कहाँ फाइल होता है? दिल्ली में। दिल्ली क्राइम देखा आपने? one person was landed in Bihar, right? He was in living in Bihar. Now that person was arrested in a very last, you know, last episode. सीजन 2 भी आ गया क्या? अच्छा, सीजन 2 भी मैंने एक ही देखा था ना। माइनर 1 को नहीं, माइनर 1 से पहले एक बिहार से जो पकड़ के लाता है लड़का को, राइट, राइट। उसमें दिखा था सीधा वहां से दलील ले आए नहीं, इट कैन बी, राइट, with nearest magistrate, with in the front of nearest magistrate an accused person can be produced. ये 3 rights है। Now let me tell you, these rights are not available to aliens and enemy. Enemy फॉरेनर नहीं, फॉरेनर के पास है। एलियंस मतलब कौन होता है? जादू, वो धूप खाने वाले नहीं। एलियंस मतलब एनी पर्सन हु क्रॉस्ड this their border without information, right? Like for example a person from Bangladesh, or a person from Bhutan, or a person from Myanmar, right? They can come under alien. Enemy means any person who cross the border from the conceived or perceived enemy state, right? Like Pakistan, ठीक है, समझ में आया? सो ये आर्टिकल 22 एंड 22। आर्टिकल 23 क्या कहता है और 22 क्लॉज 3 कहता है the above rights are not available to aliens. The above rights are not available to aliens or enemy. Aliens और enemy को फॉरेनर के पास है राइट्स भाई। फॉरेनर हैव आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। इतना समझ में आ गया, right? These 3 rights we have under article 22 clause 1 and clause 2. Now look at article 22 clause 3, no 3 तो हो गया, 4 to article 22 clause 7 actually talks about or deals with preventive detention. Preventive detention. अब यहां पर देखो, वहां पर अरेस्ट है लिखा हुआ, यहां पर डिटेंशन लिखा हुआ है, राइट। अब दोनों का मतलब क्या होता है? क्या दोनों में अंतर है? डिटेंशन का मतलब अच्छा, ऐसे भी तो अरेस्ट होता है कि some person can be arrested in some, for example PMLA. दोनों का मतलब होता है कॉन्फाइनमेंट। सुनो, अरेस्ट जनरली कॉमन लॉ के बारे में बोलते हैं, डिटेंशन बोलते हैं देयर इज अ लॉ फॉर देम, राइट। अरेस्ट, सो दोनों का मतलब होता है कॉन्फाइनमेंट। कॉन्फाइनमेंट मतलब लिमिटिंग वंस लिबर्टी, लिमिटिंग वंस लिबर्टी। आप जो खा रहे थे, आप जो घूम रहे थे, उसको लिमिट कर देना, राइट। नाउ इफ यू लुक एट there are 2 types of detention. डिटेंशन का मतलब समझ में आया? डिटेंशन अरेस्ट का मतलब सेम होता है। इन रेगुलर क्राइम देयर इज अरेस्ट, राइट, बट डिटेंशन हैज समथिंग एल्स, राइट। वहां पर भी डिटेंशन यूज करते हैं। लेट मी टेल यू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटेंशन। वन इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन।
प्यूनिटिव डिटेंशन। अच्छा, प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? अरेस्ट बिफोर द और आफ्टर द क्राइम, सॉरी, अरेस्ट आफ्टर द क्राइम। यहां पर भी तो हम यूज कर रहे हैं वर्ड अरेस्ट, अरेस्ट आफ्टर द crime, right? Now second is called preventive detention. Preventive detention. Now what is preventive detention? Yeah, arrest before the actual crime. ये होता है arrest after the crime. Crime is actual crime. When crime is done, person is arrested. That is called punitive detention. Preventive detention is, it is a arrest. It is an arrest, right, before the actual crime. इसका क्या मतलब है? It is done in order to prevent the person from doing crime, right? It is basically precautionary measures, right? It is a preventive measures. Preventive measures to stop the person from doing crime. मतलब बता, एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल क्या होगा? आपको पता है पहले इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग बहुत होता था। Booth capturing was a normal phenomena in UP, Bihar. Booth capturing? Asha, you are not acquainted with. What used to happen on the day of election? A gang of many, a group of person with arms used to come on the, polling booth, and they used to subside all the officers and then take away all the, element of this process, and then they used to, just fill the all, just put all the votes or all the names, and then they used to return the, yes, the ballot box to the officer, right? उसको पीटते भी नहीं थे, थोड़ा पैसा वैसा भी दे देते। पीटते किसको थे? जो उसको अपोज करता था, right? That is called booth capture, right? And of course, after the election, there is a result, and result, the person who captured the booth used to be declared as a winner. That was very much famous in Bihar and Uttar Pradesh, right? Now look, what happened when TN session. Have you heard about TN session? 1989 May, 89, 88 May, he was a chief election commissioner till 1992. Right? Now, when TN Session became an election commissioner, actually he took very strong action against this. And what he used to do, actually directed to arrest all the person of any village who is suspicious to be a booth capturer. Right? So police used to take all those person, right, on police station on the polling day, right, so that they cannot engage in the booth capturing, and after the election they used to be released. वोट दे के आना होगा, या कोई पुलिस वाला गया अकेला अकेला लेकर के, सबको एक साथ नहीं, सबको पता है, everyone knows if this group will go together, they'll make some noise, right? So one by one police used to go and then allow them to vote. ठीक है, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देने देते थे. Sometimes certain gundas also taken into preventive. Right, certain arrest happens in preventive detention. I'll give you lots of data. I'll give you, don't worry. Have you heard about Sai Baba? Abhi recently news mein padha hoga. He had been detained on the basis of preventive detention law. Right? He was a professor of English. He had been arrested 2013 or 2012. Recently he was released on
on, by the Supreme Court, na? Was it Supreme Court or High Court? Maharashtra High Court? No idea. साईं बाबा ऐसे करके कुछ नाम है. No idea. अच्छा. Have you heard about क्या नाम है उसका? कश्मीर का जो 2 लीडर है, फारूक अब्दुल्ला. Farooq Abdullah had been arrested under Preventive Detention Act. Yeah. Now, if you look at under prevention detention, there are several laws. There are several preventive detention law. Like आपने ये सुना है UAPA, right? Then have you heard about MISA? MISA has been repealed. Maintenance of Internal Security Act. इंदिरा गांधी के टाइम पे मेंटेनेंस ऑफ खत्म हो गया. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. अच्छा, टाडा सुने हो क्या? टाडा के ऊपर मूवी बनी है माचिस, जिसका सॉन्ग है चप्पा चप्पा चरखा चले. बोरिंग है, देखो उसको पूरे अच्छे से, राइट, ऑब्जर्व करके. सिट एंड watch it at least 2 or thrice, then you will learn something. एक ही बार देख लो बहुत है. कुछ है ही नहीं देखने को सर, राइट. और कुछ होता है 3 बार देख लो. पता नहीं मुझे, many people may go and see. कुछ होता है या कोई मिल गया. कौन? मुझे नहीं, मैं टीवी नहीं देखता. हीरालाल का, हाँ ठीक है. What is टाडा? It is terrorist activities or terrorist activity disruptive act, something type. Then have you heard about POTA? Right. Have you heard about NSA? National Security Act. बहुत लोग, many people have been arrested under NSA. Came in 1985. Right, NSA. Many people have been arrested. One so-called journalist from Bihar, he had been arrested. Yeah, Manish Kashyap. He had been arrested by which police? Tamil Nadu police under the NSA. Right? ठीक, वो अपना काम है. देखो, सबको ना अपना livelihood अर्जित करना. Everyone have a right to livelihood. Now you are putting your attention. That is your fault. You are becoming consumer. Let me tell you. You are doing something productive work in this classroom. घर पे भी जाके प्रोडक्टिव करना है और फिर आगे जाके आपको प्रोडक्टिव बनना है. Right? You have to contribute to the society, and in return you can get something. State will give you honor to you. State will give a position to you. State will give car to you. State will give you bodyguard. When you will become productive, but when you will become a consumer, right? And as consumer as you becomes, your existence become obsolete. Let me tell you. Obsolete मतलब आप बेकार हो जाओगे. Obsolete, outdated, right? For example, आप 24 घंटा उसमें देखो, क्या नाम है, मोबाइल देखो. There are many channel OTT which have multiple product. ठीक है, तो वो भी अपना काम लाइवलीहुड कर रहा है. जो देख रहे हैं उसको वो अपना काम नहीं, कुछ क्या करेंगे, रील देख करके बागेश्वर नाथ का टाइम काटते लोग. देखो, बागेश्वर बाबा. आशा, have you heard about Bageshwar Baba? Someone said to you, right? He is a Baba. Baba means he's a guru, right? Religious guru. And he actually does a prediction about your future, about your marriage, about your something, about problem, right? It is nothing supernatural. It is something scientific, right? It is something scientific, right? Yes, that quality every person does not have. That's it. Agreed. I can't have that quality, right? आपको देख करके आपका दिमाग पढ़ लेना, right? It's called psycho reading कहते हैं something. उनके पास होता है. Every person have different quality.
बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, आपके दिमाग देख करके ना, आप माइंड रीडिंग, या एग्जैक्टली आप मुझे देख रहे हो तो क्या सोच रहे हो मुझे देख करके, राइट, या आप कौन सी बातों पे कैसे रिएक्शन देते हो, राइट, उससे वो जजमेंट लगा लेते, राइट। एनीवे, यू हैड पोटा एक्ट, लिख दिया पोटा क्या, अच्छा पोटा हो गया, देन यू हैव, हो गया, इतना ही है। So you had UAPA in 1967, MISA in 1975, TADA in 1985, repealed in 2002, TADA repeal हो गया 1996 के आसपास, पोटा 2002, NSA 1985. These are the law, but most controversial law is UAPA. Yeah, it is called Unlawful Activities Prevention Act. (1967). UAPA is a Unlawful Activities Prevention Act 1967. Now, what was this law all about? Now, in 1967, this law was to declare some organization as a unlawful organization. So, for example, have you heard about SIMI? SIMI? नहीं सुना? For example, it was a student of Islamic movement in India. Yeah, a student of Islamic मूवमेंट इन इंडिया. देखिए 2006 में शायद इसको बैन कर दिया गया है ना, 2006 के आसपास, 2006 या 2007 2008 समझिए, हाँ 2001 में बैन हो गई थी. अच्छा, सिमी वाज 2001 में बैन हुई थी, राइट. तो क्या था, दिस लॉ empowered द स्टेट टू डिक्लेयर certain organization as a unlawful, illegal. ठीक है. And if you look at when the POTA was repealed in 2004, right, UAPA was amended so that, because it was repealed, so that some terrorist activity can be monitored, right. लिखवा दूं, लिखिए. In 1967, the parliament, passed UAPA that empowered the state to declare an organization unlawful or illegal. 1967, the parliament passed UAPA that empowered the state to declare an organization as a unlawful or illegal organization. ठीक है. Now in 1960, in 2007 or 2004, when quota was repealed, right, UAPA was amended that empowered the government to declare an organization as terrorist organization.
नाउ पहले था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकते थे इलीगल, नाउ दे कैन टेल दिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ terrorist organization, right? In 2004, there was an amendment in the POTA Act, right, that empowered the government to declare an organization as a terrorist organization, right? And several organizations was called as a terrorist organization. सारा ग्रुप, सारे इन्वॉल्व मेंबर जितने लोग हैं उसमें, अभी बताता हूं। ये हुआ तो 2019 में। In 2019, UAPA again amended. UAPA again amended that empowered the government to declare a person as terrorist even without ट्रायल। उसका ट्रायल हुआ ना हो, बस पकड़ो और टेररिस्ट बोल दो, राइट? हाँ हाँ, किसी को पकड़ो और टेररिस्ट कह दो, ठीक है। नाउ अगेन इन 2022 देयर वाज in 2022 UAPA amended to frozen, or in order to freeze फ्रीज का स्पेलिंग क्या है भाई? FRID जेडी, राइट? सही से आई नहीं होगा, बोली जेडी, राइट? फ्रीज द अकाउंट of an organization. Account of an organization. So if you look at have you heard about PFI? Example is Popular Front of India था ना? Now Popular Front of India has been declared as a terrorist organization and its account has been freezed, right? That is example of this law. ठीक है? हाँ जी, तो आज का क्लास यहीं तक। आपका क्लास हाँ अब होगी, बैठ जाओ आराम से। हाँ हो सकता है, हाँ दूसरा क्लास होगा, ठीक है। Tomorrow we may discuss right against exploitation and we'll give you proper notes from article 23 to article 32 and you'll get it tomorrow. Okay Vanita, stopping here.